I'll expand on Nirahara Samyama. Please listen. It's a very powerful Kriya described in Hatha Yoga Shastras. Awakening your Kundalini energy and producing energy directly from space. Please listen. Producing the energy directly from the space and bringing energy, health to your body directly from space without depending on any food intake. Through a proper visualization and Kriya, awakening your Kundalini energy, through that creating enough energy for you to live. So the first step, cognize you have become Bidadi Kalpavriksha, means our Bidadi banyan tree. How the tree produces the energy directly from air and the ether, space. While meditating on that, by meditating on that, awakening the same capability in you, awakening that same biomemory in you, your biomemory also can create energy directly from space. Please listen. And along with the cognition, do this Kriya. Inhaling through both the nostrils and the mouth simultaneously with the visualization as if the whole banyan tree is inhaling, as if your whole body is inhaling. Hold as long as you can comfortably and exhale through both the nostrils as slowly as you can. Please understand, I will also be supporting you by awakening your Kundalini energy. Wherever you are, you can do this Kriya for 21 minutes. Read all the rules and regulations of the Nirahara Samyama. Don't stop eating completely immediately. Take liquids like juices, milk. First level is only 2 days, means 48 hours. Then we will give a break, you will eat regular food. And second level is 7 days. Then you will have a break and eat. Third level is 11 days. Step by step preparing your body and mind to produce the energy directly from space. This Samyama is not fasting, please listen. It is not depriving food to your body, but it is awakening the alternative path of energy in your body. Awakening the alternative method to create energy in your body. So please sit straight. You can find all the information pertaining to this Samyama in our website. You can visit this link nityananda.org/Nirahara Samyama. Every one of you please start the Kriya now. Sit, close your eyes. Cognize you have become Bidadi Kalpavriksha. आज हम निराहार संयमा का अगले बैच को आरंभ कर रहे हैं। अगर आप इस बार निराहार संयमा में भाग लेना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमें कॉल करने का नंबर है
08027279999। अगर आप एक निराहार संयमा को कर रहे हैं और अगर आप इस संयमा के दौरान भूख का अनुभव करते हैं या थकावट अनुभव करते हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप तुरंत आहार लीजिए। अगर आप में कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो इस निराहार संयमा को आरंभ करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क कीजिए। अब हम आज के निराहार संयम ध्यान में प्रवेश करेंगे। सीधी तरह से बैठ जाइए और चेतना स्थिति के साथ कल्पना कीजिए कि आप बिड़दी वटवृक्ष बन गए हैं। इस कल्पना के साथ आप अपने दोनों नासिकाओं और मुख के द्वारा सांस अंदर लीजिए। जितनी देर आप अपने सांस को अंदर बांध कर रख सकते हैं उतनी देर आप अपने अंदर सांस को बांध कर रखिए। जब आप अपने सांस को और बांध कर नहीं रख पा रहे हैं तब आप अपने मुंह बंद रखकर अपने सांस को अपनी दोनों नासिकाओं द्वारा धीरे से छोड़ दीजिए। आप में अपनी पूर्ति श्रद्धा, उत्तरदायित्व और लाभान्वित करने के 4 तत्वों के साथ आशीर्वाद देता हूं कि आप सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और आप सब अपनी जीव ऊर्जा को सीधे आकाश और वायु से उत्पन्न करें। अब क्रिया आरंभ कीजिए और इस क्रिया को लगातार 21 मिनट तक कीजिए। प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, cognize you have become Bididi Kalpavriksha. Inhale through both the nostrils and mouth. Simultaneously, hold as long as you can by closing both the nostrils comfortably. Exhale as slowly as you can, only through both the nostrils, comfortably. With this, I bless you all. Let you all experience Kundalini awakening. Let you all produce the energy directly from space. Live health, bliss and enlightenment. Namah Shivaya. Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share and explode in eternal bliss. Nityananda. Nityananda Dhyanapitham, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nityananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.